नमस्ते, जय हिंद एंड वेलकम टू क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। आज थोड़ा सा सेटिंग मेरा डिफरेंट है, बट आज त्योहार का दिन है, तो सबसे पहले इससे पहले कि मैं हमारे दोस्तों को वापस यहाँ क्रिकेट क्रेजी दोस्तों को लेकर आऊं, आप सबको आज के पवित्र दिन की, फेस्टिवल दिन की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। नॉर्थ में बैसाखी है, नॉर्थ ईस्ट में बिहू है, साउथ में तमिल न्यू ईयर है, पुतांड है, कल विशु है केरला में। सो इट्स फेस्टिव टाइम, और इस फेस्टिव टाइम में क्रिकेट खेला जा रहा है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। लेकिन क्या ये क्रिकेट इलेक्ट्रीफाइंग है और फेस्टिव है, इस पर भी आज बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हमारे क्रिकेट क्रेजी दोस्तों के पास। के श्रीनिवास राव और चेतन इस वक्त हमारे साथ हैं। तो चेतन नरूला भी हैं। चेतन नरूला और श्रीनिवास, आज तो त्योहार का दिन है, ये फेस्टिवल सीजन है, क्योंकि अगले हफ्ते भी, अगले वीकेंड भी त्योहार आ रहा है, ये वीकेंड भी त्योहार है। अब जैसे ही ये स्प्रिंग टू समर वाला ट्रांजिशन आता है, तब तब ये सब हमारी ऐसी ऋतुएं ही ऐसी हैं। लेकिन क्रिकेट क्या फेस्टिव हो रहा है। इससे पहले कि आज की बात करें, जो ईडन गार्डन्स में होने वाला है, केकेआर बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, दोनों टीमें दे आर कमिंग ऑफ अ विन। केकेआर तो भाई कुछ एड्रेनलिन रश के साथ, आफ्टर दैट रिंकू सिंह मैजिक, उनको 2 मैच में 2 ऐसे मैजिशियंस मिल गए, शार्दुल ठाकुर और रिंकू सिंह। उस पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक, जैसे हम करते हैं हमेशा, कि फ्लैशबैक में क्या हुआ। गुजरात टाइटंस बनाम पंजाब, और ये पंजाब सुपर किंग्स मोहाली में खेला गया मैच। सबसे पहली बात, आपको ऐसा लगता है कि सैम करन डिजर्व्स द काइंड ऑफ मनी दैट्स बीन स्पेंट ऑन हिम, उनके अब तक के परफॉर्मेंसेस को देख के? श्रीनिवास राव, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन द वे द बिडिंग हैपेंड फॉर सैम, और वहीं से पता चल गया था कि उनका एक वैल्यू क्या है एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। एंड सीजन आफ्टर सीजन among overseas players, Sam Curran has been the name to look forward to. It's but around Sam Curran, मैं कह रहा हूँ पंजाब की जो ओवरऑल अटैक है वो देखिए आप कितनी अच्छी दिख रही है। सैम तो है ही, and but look at a guy like Brar, who came out of nowhere and I think stood out in yesterday's bowling performance. And I think और Arshdeep भी है उनके साथ overall। नहीं, अच्छी उनकी बॉलिंग लाइनअप है। दे एंडेड अप ऑन द लूजिंग साइड। आई एम जस्ट सेइंग दैट द crores that have been spent on पंजाब Sam बिंग Curran, पंजाब is he actually giving you that kind of value, Chetan? That's where I'm saying, भाई आप इससे ज्यादा वैल्यू क्या है? 2-3 करोड़ रुपए पे खरीदा गया ऑलराउंडर आपको नहीं डिलीवर करेगा, जहां आपने इज वन ऑफ द टॉप 3 पेड प्लेयर्स इन दिस सीजन, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। देखिए, जहां तक उनकी वैल्यू की बात करें हम, दी ऑक्शन हैपेंड इन दिसंबर, ही हैड वन द T20 वर्ल्ड कप फॉर इंग्लैंड इन नवंबर। अकेले नहीं जीता था, लेकिन फिर भी ही वाज मैन ऑफ द टूर्नामेंट, ही वाज मैन ऑफ द फाइनल। तो वो थोड़ा सा इमोशन, दे गेट रिडन टू द प्लेयर्स ऑक्शन, यू कैन कॉल इट एज ऑक्शन डायनामिक्स। क्योंकि अभी ये देखिए कि आप बहुत सारे ऑलराउंडर जो हैं, खासकर की ओवरसीज ऑलराउंडर्स, इस प्लेयर्स ऑक्शन में बिके थे और काफी हाई प्राइस पे बिके थे। तो इन अ वे इट वाज बेसिकली अ मार्केट फॉर हाई प्राइस ओवरसीज ऑलराउंडर्स, जिसमें सैम करन प्रूव टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव। द प्रॉब्लम वाज द इंपैक्ट प्लेयर रूल केम आफ्टर दैट ऑक्शन। अगर उस ऑक्शन से पहले वो आ जाता, क्या ये प्लेयर इतने महंगे बिकते? The impact player rule came after the auction, क्योंकि उस टाइम पे it was still in the trial phase, PBKS was still thinking, final decision उन्होंने बहुत बाद में लिया, and auction उससे पहले हो जाते। So now you have teams which are not playing all rounders or not giving bowling to all rounders like Marcus Stoinis etc. तो वहां पे ये देखना है कि इनका यूटिलिटी कितना है या क्या नहीं है, but not saying कि सैम करन का यूटिलिटी नहीं है। I thought लास्ट ओवर कल फंसा दिया था उन्होंने मैच, जब शुभमन गिल को उन्होंने बोल्ड किया, तो आई थिंक मैच वहां पे फंस गया था। बट इट वाज तेवातिया, तो तेवातिया का मैजिक तो है। बट यस, आंसरिंग योर क्वेश्चन, हिज परफॉर्मेंसेस सो फार, इट्स नॉट वर्दी ऑफ द 18.5 करोड़। बैटिंग में उनको बहुत नीचे यूज किया जा रहा है, और बॉलिंग में दीज कंडीशंस आर नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर हिम टू बोल एट। तो 18.5 वाज ऑप्शन डायनामिक, बट yes, we could see a bit better performance, and he's also, it's about taking a bit of time and the way he gels into the side and the conditions. So I think season के बाद देखते हैं कि 18.5 करोड़ का वैल्यू रहा है या नहीं रहा है। इसमें ये है कि वो एक क्वालिटी प्लेयर है, नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम हिज फैक्ट दैट क्वालिटी प्लेयर। श्रीनी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने किसी को इतना टॉप डॉलर दिया है, इतना पैसा दिया है, तो मैं तो उसको पूरा निचोड़ूंगा ना।
मैं उसको इतना लोअर डाउन द बैटिंग ऑर्डर क्यों I लेके आऊंगा, उसको अंडर एक्सपोज क्यों करूंगा, मैं तो पूरा खींच के लूंगा उससे, एक एक बॉल एक एक रन। सीधी Right. So let's break this down. Chetan brought that point. Yes, there is a huge, ये हमको अगले ऑक्शन में ही देखने को मिलेगा कि इम्पैक्ट प्लेयर का जो एक इफेक्ट है ये क्या हुआ है ऑक्शन पे. But that said, the value of a quintessential all-rounder is not going fading away anytime soon. Okay. फॉर्मेट गेम एक ऑलराउंडर जो है वो हमेशा डिमांड में रहेंगे. एंड टॉप सैम क्वालिटी ऑलराउंड, टॉप क्वालिटी ऑलराउंड, which I think in this format Sam Curran is potentially is. Yeah, he is. Yeah, he is. The question that Anand is bringing up, that इतना पैसा जो खर्चा हुआ है, अब देखिए इसमें कोई at the end of the day it's a game, Anand. I mean let's kind of divide 2 or 3 talking factors. The money is no guarantee of performance. Money is only guarantee of someone's worth, which is based on past performances, right? Or potential. One of the two things, and I think Sam has both. He has past performances to show, he has potential to show, right? So money comes on the basis of that. अब रही बात उनको उनकी जो टीम है वो उनको पंजाब किंग्स उनको कैसे यूज कर रही है. मैं ये बात मानता हूं कि there is an option he could have come a little up in the order, but do they see him as an innings builder? Do they see him as an innings builder? देखो टीम भी एक अपना स्ट्रैटेजी बना के आ रही है. आप उस टीम को देखो, उस टीम में ज्यादा बैट्समैन नहीं है. वो शाहरुख खान देखो, वो चल गया, वो 9 बॉल में कुछ 20-21 रन बना दिया, तो टोटल जो है उनका स्ट्रेच हो गया, राइट? अदरवाइज ये तो बुरी तरीके से पंजाब जो है फंस गई थी, क्योंकि टॉप ऑर्डर जो है वो, तो अब वो सैम को वहां पे किस रोल में देख रहे हैं? आर दे लुकिंग एट हिम इन टर्म्स ऑफ एन इनिंग्स बिल्डर? आई डोंट थिंक सो. क्यों? क्योंकि अगर उसको टॉप में भेज रहे हैं वो, और जिस तरीके का इनएक्सपीरियंस लाइनअप राइट नाउ पंजाब के पास है आउटसाइड ऑफ शिखर धवन, आई थिंक नीचे आते आते दे हैव नो डिपेंडेंसी फैक्टर लेफ्ट एट ऑल. मेरे ख्याल से इसीलिए वो मिडिल ऑर्डर देखिए जो जिस पोजीशन में, पर श्रीनी मैं वही तो आपको कह रहा हूँ, इन्होंने अपना जो पूरा जो स्टॉक है, जितने खिलाड़ी ये खरीद सकते थे उन्होंने खरीदे नहीं है. पैसे इन्होंने काफी खर्चा किए हैं, और खर्चा कुछ प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा किया है. मेरा यही कहना है कि क्या हर फ्रेंचाइज दिमाग लगा के पैसा अब आगे से खर्चा करना शुरू करेगा? और अगर मैंने किसी को इतना पैसा लेके लिया है, तो अगर मेरी जो बनिया मेंटालिटी होगी, वो बनिया मेंटालिटी तो यही होगी एज एन ओनर, एज अ टीम फ्रेंचाइज, एज अ पर्सन, कि मैंने जितना इस पे इन्वेस्ट किया उतना मैं हार्वेस्ट भी करूं, उतना मैं इससे निकालने की कोशिश भी करूं. अदरवाइज लॉजिक यही होगा कि यार भाई, जिसको आपने 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया दिया, वो तो आपको और ज्यादा करके दे रहा है. वैल्यू पर रन, वैल्यू पर रुपी स्पेंट इन टर्म्स ऑफ रन्स, विकेट्स, बॉल्स, इकोनॉमी रेट, वो कोई लॉजिक नहीं बनता ना. कॉस्ट पर रन, कॉस्ट पर विकेट, कॉस्ट पर बॉल, आप देखो ना, आप ये 3 मेजरमेंट्स पे अगर आप, इफ यू लुक एट द ओवरऑल बिजनेस ऑफ इट, it really doesn't make sense really. And then Chetan, your thoughts. Okay, first of all, I'm really not giving a lot of credit to the way Punjab Kings have gone about thinking. Okay, not this year, not last year, season after season. Okay, perfect. पैसा जो वो लोग खर्चा करते हैं, क्रिकेट एक अलग डायरेक्शन में है, पैसे खर्चा करना अलग डायरेक्शन में, वो दो अलग अलग उनके लिए प्रोसेसेस हैं. तो उसका कई बार ऐसा होता है कि मेल देखो आप, मतलब उनका मतलब एक अर्शदीप को उन लोगों ने रिटेन कर लिया था, जो अच्छा किया, बट अदरवाइज मुझे कभी कभार समझ में नहीं आता है कि उनका गेम प्लान जो है वो क्या है. चेंज जो I don't know. I mean, I've always felt to. लेकिन अभी पिछले मैच में भी कोई एक उनका शिखर धवन 99 144 रन में से 99 शिखर धवन ने मारा. बाकी पूरी टीम की बैटिंग शिखर पे बेस्ड है. ये पूरी टीम की बैटिंग शिखर पे बेस्ड है. I mean, you ought to feel bad for that guy, but ये पूरा प्रेशर उसको अकेले को हैंडल करना है. देखिए, चेतन, टेक दिस. इट्स अ नाइस क्वेश्चन. सुरेश इज आस्किंग, पवन इज आस्किंग, देखो लिविंगस्टन के बिना आप बैटिंग कर रहे हो. हाँ, वो थोड़ा सरप्राइजिंग है. ऑब्वियसली अभी लिविंगस्टन अवेलेबल नहीं है, और उनको आने में और मतलब उनको वार्म अप करने में, टू गेट टू स्पीड, थोड़ा सा टाइम लगेगा. सो बट आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट लिविंगस्टन. आई थिंक दे आर मिसिंग जॉनी बेस्टो एज वेल. आप जैसे श्रीनी ने बोला कि उनको स्ट्रैटेजी समझ नहीं आया है. एक तरीके से आपने क्या किया है, यू लेट गो ऑफ मयंक अग्रवाल, क्योंकि लास्ट ईयर मयंक अग्रवाल वाज द ऑड मैन आउट इन दैट टॉप ऑर्डर.
आपको मयंक अग्रवाल को नंबर 5 पे बैटिंग कराना पड़ रहा था, यू डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद मयंक अग्रवाल, और वो कैप्टन थे तो मयंक अग्रवाल उसी वजह से खेल रहे थे, इसीलिए दे गॉट रिड ऑफ मयंक अग्रवाल, दे मेड शिखर धवन कैप्टन की, शिखर धवन तो ओपनिंग करेंगे ही करेंगे, एंड देन दे हैड द प्लान टू यूज जॉनी बेस्टो एंड लियम लिविंगस्टन, लेकिन बेस्टो का एक्सीडेंट हो गया, ही इज नॉट अवेलेबल, लिविंगस्टो जो भी है उनके साथ हुआ है एंड ही इज नॉट हियर, और ही इज कमिंग लेट, व्हाटएवर द रीजन, एनओसी अभी उनको लेट मिला था. So what they are doing is they are making up the numbers. Ab Bhanukar Rajpaksa, he's a flashy batsman. He reminds me of Jayasurya in many ways, but obviously he's not that pedigree and he's not that consistent. ठीक है? उनकी शॉट मेकिंग मुझे कभी-कभी वो फ्लैशबैक्स दिला देती है जयसूर्या के, जो हमने एज किड्स हमने देखे हैं. He's modeled his game. He's modeled himself. He's modeled his game idol. Jayasuriya. He's modeled his game around Jayasuriya, but वो है नहीं. हाँ. वो कंसिस्टेंसी या वो फियर फैक्टर नहीं है. सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर जस्ट मेकिंग डू विद इट. अब मैटी शॉट उन्होंने कल अच्छा खेला, बट इज ही द इम्पैक्ट प्लेयर? व्हेन आई से इम्पैक्ट प्लेयर, द काइंड ऑफ इम्पैक्ट यू मेक, नॉट द इम्पैक्ट प्लेयर. तो इज मैटी शॉट मेकिंग द इम्पैक्ट जो लिविंगस्टन करते? नहीं. सो दे आर सोरली मिसिंग लिविंगस्टन. आई एम होपिंग ही कम्स बैक क्विकली, एंड क्योंकि अभी आपको एक शिखर धवन रन दे रहे हैं, एंड देन मिडिल ऑर्डर आपका, यू नो, इट्स वेरी फ्रेल मिडिल ऑर्डर. या तो प्रभसिमरन चल जाए, या जितेश शर्मा चल जाए, या शाहरुख खान चल जाए. अब एक और चीज भी है, जितेश और शाहरुख खान पे दे हैव इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट हैज नॉट पेड ऑफ. इट हैज नॉट पेड ऑफ. आप बाकी टीम से कंपेयर करें, वहां पे you don't have two youngsters or two unknown quantities in your middle order. Every team has that one specific Indian batsman to propel them in the middle, जो पंजाब के पास नहीं है, and I think that is hurting them. But अगर लिविंगस्टन आ जाते हैं, then it would not hurt them as much, क्योंकि वो एकदम instant impact करेंगे. इसीलिए मैंने बोला कि आप सैम करन को बहुत नीचे बैटिंग करा रहे हो. सैम करन can give you a few extra runs with a few extra impact up top. आप उसको और वो खेल सकता है, वो इंग्लैंड के लिए खेल चुका है, वो टॉप ऑर्डर पे, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल के दिखा चुका है, वो डिलीवर करके दिखा चुका है. और मैं वही कह रहा हूँ यार, आपके पास ठीक है, आपके पास कुछ कंसर्न्स आ गए, एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, दूसरे बंदे का कोई पर्सनल इशू हो गया, तो की प्लेयर्स आउट ऑफ दैट प्लेइंग 11 योर बैटिंग दिस वन मिक्स निकल गए. पर जो बंदा कर सकता है उसको तो आप ऊपर खिलाओ, जो बंदा कर सकता है उससे तो आप थोड़ा नहीं. और इस पे आपने पैसा खर्चा किया है ना, तो कम से कम उसको दिखाओ तो सही, क्यों पैसा खर्चा किया, इज ही वर्थ इट और नॉट. उसको थोड़ा दिखाओगे, थोड़ा फ्लॉन्ट तो करोगे. आप वो भी नहीं कर रहे. I personally think the strategy was to take a gamble, और कुछ नहीं. The strategy was just to take a gamble, just try and like kind of push the others and keep Sam to back it up if things don't go the way they were. But that's not working out right now because you don't have Livingston. आपका impact middle order. But problem is they can't. They don't have choices left with them. So it's either that or they go all out and push Karen ऊपर, and then say लगी तो लाख की वाला हिसाब है. देखिए सिंपल यही, आपको थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा. अगर आपके टॉप के 3 इंक्लूडिंग शिखर धवन अगर चल जाते हैं, जैसा आपका पहला 10 ओवर में आपके सिर्फ एक ही विकेट गिरा है, तो आपको सैम करन को आप थोड़ा सा नीचे रोक के रख सकते हो. अगर आपका मान लो टॉप 3 अंदर पे या 1 और 2 घुस गए, तो आपको सैम करन को जल्दी अंदर ऊपर ले जाना चाहिए, ताकि ही कैन प्ले अ लॉन्गर इनिंग, स्टडी द रोल, एंड ही कैन you can depend on him. Without Livingston, Sam Curran should not be batting lower than 6. Simple as that. अगर 7-8 पे आप उसको बैटिंग करा रहे हो, that is very low. They tried balancing it. 6 पे आया ना, he के 7 पे है, 7 पे है. जितेश और शाहरुख उससे पहले आते हैं. हाँ, और कल शाहरुख चल गया, लेकिन he doesn't inspire confidence in me, and I'm very upset with you haven't gotten the return of investment on Shahrukh. नहीं है. और जितेश also, see that day also जितेश behind the wicket he dropped that all important catch. वो एक कैच उसने लपक लिया होता, उस मैच का शेप दूसरा होता. तो अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब एंड टाइम पे आपको क्रंच मोमेंट से आपको उससे कुछ डिलीवरी चाहिए, आपको नहीं मिल रही. Just quickly, let's just spend 2-3 minutes on Gujarat Titans before we talk about today's match. So from Punjab Kings to Gujarat, do you think they seem to have the magic monkey with them, in the sense कि जहाँ पर lady rub of the green is working with them, and is Shubman Gill actually trying to prove talismanic? कई बार होता है ना कुछ टीम के साथ कि भाई इनके ऊपर वो है प्यार, वो कहते हैं ना, मेहर वाला साया है, चल रहा है. In the sense they have the blessings of the X element, the divine, and then you have a talismanic player. जी,
I'll make a criticism of Shubman Gill. I did not like his innings yesterday. I'll be very honest. And I think Virender Sehwag का भी similar comment आया है. Shubman Gill should have finished that match before the 20th over yesterday. He was set. He could have played big shots anytime he wanted. He did play big shots बीच में भी. जब आप एक proper set हैं और ऐसा नहीं है कि वो wicket tough था. It was a proper batting wicket. The opposition is down on its knees. तो आप कहीं ना कहीं पे accelerate कर सकते हैं. ठीक है, आपको मालूम है कि तेवतिया और मिलर आ रहे हैं, लेकिन आप एक्सेलरेट कर सकते हैं ना. आप 50 बॉल पे 60 रन बना रहे हैं, किस बात के लिए? क्या आप अपनी एवरेज बढ़ा रहे हैं, अपने रन बना रहे हैं? तो वहां पे आपको एक सेल्फिशनेस दिखी. मुझे आई एग्री विद व्हाट वीरेंद्र सहवाग सेड. अब वो कहां उन्होंने कहा है दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट व्हाटएवर ही सेड, एंड वो वीरेंद्र सहवाग कहीं ना कहीं ये कल फीलिंग मैच देख के भी आ रही थी कि शुभमन गिल न्यू कि भैया मैच तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे. लेकिन आप देखिए एंड में बिल्कुल गड़बड़ा. अगर राहुल तेवातिया मिस कर देते, वो आउट हो जाते, तो वहां पे गड़बड़ा जाती बात. राशिद खान भी थे उनके. You are assuming you are going to win the match, and you are going to win the match. There was no doubt about it. But when he had crossed 40, he had no business just taking his time, getting to his half century, then scoring 60 or 50 balls. Boss, आप set हो. Punjab is on its knees. हार मार के खत्म करो. You know what are you waiting? You're going to get your 50. You're going to get. It's very easy to think, and I think that's a spontaneous reaction, but somewhere it could also be that when that strategic timeout happened, the message may have gone out to Shubman Gill that you need to finish this, take it deep, stay around, don't drop it, don't go for don't do something rash. He did not need to take it deep. No matter how strong that's a point of view. I'm batting guessing lineup it is is, also possible. no matter how strong that batting lineup is, you know, it just change. It just takes two dismissals for the entire game to turn up on its head. वो कल वो हार्दिक का वो wicket गया, and Miller slowed down. It was almost run a ball, and वो क्या मतलब कोई मतलब नहीं था उसका. They could have. I agree. I agree with what Chetan is saying. Even that Sehwag comment. Yeah, but you asked without the Sehwag comment. I mean, Sehwag comment came today, Srini. Yeah, Sehwag comment came today. I mean, even watching the match, you could feel it कि आपको ये मैच 18 ओवर से ऊपर खत्म, 18 ओवर से ऊपर नहीं जाना चाहता था. Your opener is scoring 60 or 40 balls, and it's not like you're chasing 180, 190. You're chasing 150. If your opener is scoring 60 runs, then the match should end in the 17th or 18th over. That is how the IPL works. वो कल जबरदस्ती उसको खींचा है मैच को. It is logical. It is, like I said, it is logical. It is possible. I'm just playing that there could be a counter narrative, a counter story there, where somewhere somebody in the team would have thought कि यार यहाँ तक आके suddenly अगर एक दो विकेट गए and you try and do something to try and finish off the match and you end up getting out early, तो फिर अगर पूरा फिसल गया तो जीता जिताया मैच हार ना जाए तो तुम रुक जाओ वहां पे, तुम टिके रहो. ये भी because अगर तुम लास्ट तक हो तुम फिनिश कर दोगे. ये पॉसिबल है, ये एक पॉसिबिलिटी है. मैं क्या I agree, क्योंकि हार्दिक का जो विकेट गिरा है, I think that is what messed up their chances or messed up their minds कि ये कुछ हो ना जाए. But see, you still have David Miller, you still have Tewatia, you still have Rashid Khan. But my point is कि he should have accelerated when he was batting with Sai Sudarshan. Sai accelerated. उस टाइम पे you need, उनका पार्टनरशिप भी हुआ है 40 of 25, 30 balls जो भी है. That is the time where you order the kill and finish it off by the 16th over. And expecting Miller to accelerate at at number 5, that's always a risk. There's always going to be a risk factor involved there, rather than expecting a well-settled opener to accelerate. Correct. और एक और चीज है, डेविड मिलर अब वो डेविड मिलर नहीं है जो दूसरे बॉल पे छक्का मार देते हैं. डेविड मिलर अब वो है जो 6, 7, 8, 10 बॉल खेलने के बाद फिर वो बिल्कुल. तो अगर आप उनको एक 5-6 ओवर देते हो तो वो खेल सकता है. कल जो राहुल तेवातिया का शॉट लगा, एंड ऐसा नहीं कि लगा, he played a shot and he got the better of Sam Curran, लेकिन in case he would have missed that, he was out plumb LBW. तो फिर वहां पे इक्वेशन चेंज हो जाता है. You would have gone for a super over में कुछ भी हो सकता है. That was down to Shubman Gill taking it down late. लेकिन जहां तक आपने बात किया ना कि they have that lady luck or the monkey, the lucky monkey on their back, that is absolutely true. मतलब आप कुछ भी कर लो, ठीक है. रिंकू सिंह was it's a 1 in a million chances, it was an aberration. But और उस दिन भी ऐसा नहीं था कि हारे हुए थे मैच, वो नहीं, वो जीता जिताया मैच हारे हैं, तो वो जीता जिताने तक वो पहुंच गए थे ना. एवरी गेम गुजरात टाइटंस वो जीतने के पोजीशन में जरूर पहुंच जाते हैं. एंड yes, Shubman Gill was there, he got out on the last over, but Tewatia was like, Tewatia है, ये कर देगा. Miller वैसे भी kind of David Miller, chase and all. I mean, he's been very good at what he does, but at the end of the day,
quality slow bowling, always a risk, Yeah, always a risk. हाँ, वो lottery है वो. But I tell you, 16, 18 matches of the IPL so far, when you just get the sense that one of the teams that should make it to the playoffs or if not to the final is Gujarat Titans. They still seem to have that entire mix and they are a top good side. Yeah. Clash of the IPL coming Sunday. Coming Sunday is clash of the IPL. Gujarat Titans versus Rajasthan Royals. Yeah. It's a replay of the final last year, I think. और एक और चीज भी मैं बोलता हूँ यहाँ पे, yesterday was a test for पंजाब किंग्स, क्योंकि पंजाब किंग्स, चलिए ठीक है, जो भी उनका ऊपर नीचे चल रहा है, कल का मैच हार गए, अभी 4 में से 2 मैच हार गए हैं. I am getting a very different vibe from Punjab Kings, and that's probably because of Shikhar Dhawan's captaincy. They still look a very sedated side, very settled in what they are trying to do. अब वो 2 मैच में नहीं क्लिक किया है, that's fine. That is क्लिक करेगा आपको लग रहा है. लेकिन वो क्लिक करेगा, जैसे ही लिविंगस्टन वापस आ जाएंगे और किसी ना किसी स्टेज पे वो आएंगे, it's going to start clicking. और अभी कल धवन भी फेल हो गए. He's going to continue scoring runs. So the moment is looking a very मेरे को पंजाब किंग्स इतने सेटल्ड कभी नहीं दिखाई दिए इन व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. There's always some एक मेथड दिख रहा है, एक मेथड दिख रहा है इस बार, और ऐसा लग रहा है कि एक प्लेबुक है, ये प्लेबुक पे वी आर गोइंग टू स्टे ट्रू टू दिस प्लेबुक वेदर इट वर्क्स और नॉट, एंड इवेंचुअली इट शुड स्टार्ट वर्किंग. इज देयर थॉट प्रोसेस. पहले 2 मैचेस में तो लगा नहीं. I see them as a top 5. I see them as a top 5 team along with CSK. I think CSK पंजाब के बीच में रहेगा as the fourth team for the playoffs. चलिए देखते हैं, क्योंकि उस दिन मुझे एक चीज बहुत मजेदार लगी कि अगर धोनी उसको डीप लेके जाने वाले थे और धोनी और जडेजा वहां खड़े होके वो खेल रहे थे कि आई एम गोइंग टू टेक इट राइट टू द लास्ट ओवर, द calm that I saw in Sanju Samson's face and the way he was ready to soak it in, it was just amazing. And there was something special in that Sandeep which happened that day. Those Yorkers and the way he bowled to the likes of Jaddu and to Mahi. Yeah, it was just magical. क्योंकि उसमें क्या होता है कि धोनी क्या करते हैं कि ही मेक श्योर कि जो आपका लास्ट ओवर में जो बॉलर है ना, वो उसको ही फोर्सेस देम टू थिंक कर देते हैं, क्योंकि जब आप ज्यादा सोचने लग जाते हो यू मेक मिस्टेक्स एंड धोनी फीड्स ऑफ दोस मिस्टेक्स. संदीप की स्पेशल बात यही थी कि ही मेड हिम थिंक, बट व्हेन ही थॉट अबाउट इट he was able to actually win that battle with MS Dhoni going around the wicket, tapping it from room. So I think Sandeep bowled a magnificent last 3 deliveries. And that also, I think, yes, you can praise him, and yes, it's praiseworthy क्योंकि he was not talking a lot to Sandeep, but उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि कोई कैप्टन कुछ कर सकता है. When MS Dhoni is batting there in that way, और आपको ऐसे फिनिशिंग वाला है, तो वो भी मैं समझ गया, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ संजू सैमसन का जो शोल्डर ड्रूपिंग नहीं हुआ, बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं हुआ, वो फिर भी वहीं पे खड़ा था. और एंड आई थिंक दैट इज आल्सो बिकॉज लास्ट सीजन ऑफ कैप्टनसी, लास्ट टाइम भी उन्होंने काफी सारी एडवर्सिटी झेली है, और वो कहीं पे एक छोटी सी मुझे एक मैच्योरिटी लगता है, एंड समहाउ आई फील दैट बॉय शुड गेट हिज ड्यू. मुझे लगता है कि अगर वो उसके बल्ले से रन बन जाने लगे ना, अगर थोड़ा सा उसकी बैटिंग में कंसिस्टेंसी आ जाए, देयर इज नो रीजन दैट एनीथिंग शुड स्टॉप संजू सैमसन. एनीवे, चलिए आज के मैच की बात करते हैं. आज के मैच में आपको क्या लगता है कि क्या फिर से कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कोई एक मैजिशियन, एक जादुई कोई निकल के आने वाला है पिटारे में से? अब तो उनके पास थोड़ा इजाफा भी हुआ है, खबर है कि जेसन रॉय, लिटन दास, तो उनकी बैटिंग में थोड़ा हेफ्ट आने वाली बात हो रही है. तो ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद और उनको देखे तो आपको क्या लगता है, ये मैचअप थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जेसन रॉय अवेलेबल है ना, एंड इज ही कंफर्म टू बी प्लेइंग टुडे, ये देखना होगा. लेकिन उससे क्या होगा कि केकेआर की जो बैटिंग है दैट बिकम्स रियली सॉलिड, क्योंकि रिंकू ने कमाल कर दिया है. दे जस्ट स्टार्टिंग टू गेन सम मोमेंटम, और भी आंद्रे रसल के छक्के आने अभी बाकी हैं सीजन. नीतीश राणा ही इज ग्रोइंग इनटू द कैप्टनसी रोल, ही इज ग्रोइंग इनटू यू नो कि मेरे को कैसे खेलना है. वेंकटेश अय्यर वो एकदम से फॉर्म में आ गए हैं, दे हैव रियलाइज्ड हाउ टू यूज हिम एज एन इंपैक्ट प्लेयर. तो यू नो द टिडबिट्स आर फॉलिंग इन प्लेस. दे आर नॉट एज सेटल्ड द टीम, जैसे मैंने बोला कि पंजाब देयर इज अ मेथड, लेकिन इनका मेथड इज स्टार्टिंग टू कम टू द फोर. एंड दे आर, आई थिंक लाइक यू सेड कि जेसन रॉय भी है, लिटन दास भी है. There's just one proper batsman who can give them that impetus, give them that impact away from making a really strong point, क्योंकि इनका bowling attack काफी अच्छा है. और सनराइजर्स की बात करें तो उनका squad is very good, but I think they've had a very bit of a mismatch start to this tournament, इसीलिए to this season in fact, तो इसीलिए they're just waiting to gain that momentum and
and come in. तो You जेसन रॉय मुझे खेलते you हुए नजर नहीं आ रहे हैं आज वैसे. are you happy with the way Bhuvneshwar Kumar is bowling, Srini? And your thoughts on KKR and also SRH? You think he's now still good to be a possibility? You talk about KKR and then we come to SRH and also on Bhuvi, and whether or not you see him part of the ODI I'll squad just for quickly the say World a Cup. couple of things. Bhuvi, no, consistently found it disappointing. Consistently now for a while. He's there because there's no better choice. I'll stick to that. Two, today we are talking about KKR, with a little bit of enthusiasm here. Now, had it not been for those 5 6s, I think today's narrative would have been, यार ये team तो बिल्कुल out of place लग रही है. But Yeah. as you pointed out, this guy Jason Roy, like kind of lit in the, like, for example, I want to see what they do now. They're not playing. नहीं खेल रहे? Same 11 for Kolkata. Same 11. Okay. Same team. So then I the only last time क्या वो, let's be very honest here, the match तो निकल गया था हाथ से. रिंकू ने आके single handedly पलटा. Now you have to have those. Venkatesh Iyer was there. Venkatesh Iyer also scored runs और उनका middle order भी runs. Fair enough. Nitish Rana ने भी run बनाए थे. Nitish Rana ने भी run बनाए थे. तो I'm not saying कि, yes, I'm not saying it was just Rinku Singh. Rinku Singh did that in that over, लेकिन उस position पे तो रिंकू नहीं लेकर आया था ना. Yes, but मैं कह रहा हूँ कि अगर रिंकू नहीं खेलता तो आप 20-25 रन से तो आप मैच हार रहे थे. और काफी बड़ा मार्जिन हुआ है, वो काफी बड़ा मार्जिन है 20-25 रन का मार्जिन, राइट. और मैं कह रहा हूँ कि लाइक देखिए शार्दुल खेला, did that turnaround, then as Venkatesh, Chetan is pointing out about Venkatesh, and then you have a Rinku. Somebody on a given day is standing up. No, I'm saying somebody is on a given day is standing up, raising the hand, getting the job done, is what is saving KKR. So there is a thin line separating what they are as a team and how they've been managing to punch above their weight because of one new guy raising his hand every day. I think in that lies the difference. No, I like I said कि पंजाब का जैसे बिल्कुल मेथड दिख रहा है, उनका मेथड नहीं दिख रहा है. Let me also say this. आपने भुवनेश्वर की बात की, लेट मी ऐड टू इट. आप कह रहे हो इस साल उन्हें स्क्वाड में होना चाहिए ओडीआई वर्ल्ड कप के, उनको पिछले 2 साल के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं होना चाहिए था. भुवनेश्वर कुमार इंटरनेशनल करियर एंडेड इन 2020. आप इस साल ये तो बहुत लेट है. आई एम सेइंग 23 ओडीआई वर्ल्ड कप अगर आप भुवनेश्वर को खिला रहे हो, यू नॉट विनिंग द वर्ल्ड कप. एंड ऑफ. 21 में यू डिड नॉट विन, 22 में यू डिड नॉट विन, 23 में भी आप नहीं जीतोगे अगर आप भुवनेश्वर कुमार इज इन योर स्क्वाड. He's done. He's truly done. You asked me किस squad में होना चाहिए था वो? He should have been in the squad when India toured England the last time. He should have been in that squad before when India scored England. He should have been in the squad in the previous WTC final. He's playing the wrong format. In the next coming WTC final. जो format उसे खेलनी चाहिए वो खेलना नहीं चाहता है. क्यों नहीं खेलना चाहता है? मैंने क्यों नहीं खेलना चाहता है? कोई और आंसर कर सकता है? नहीं, उसी को आंसर करना है. I had raised this question. In fact, I had raised this question a year and a half ago, and I had said this, that he's not bothering with the format where he needs to be seen playing, right? And in a country where India needs his services. So let's set the better. I mean, the priority is somewhere after the injury and perhaps what has happened for him, he somewhere, I don't know if that's the case, that he believes that he's not, does not have the longevity, or he does not have the thing to last through 5 days of cricket, test cricket, and to bowl 25, 30, 40 overs on the trot or in an innings. So somewhere maybe that is also a challenge for him. We don't know. No, but I feel that he's a great talent, and I don't know, his career is perhaps ending too short, or it's nipped in the bud too early, perhaps. I don't know. I've always liked him as a player. I've always liked him as a bowler. He's very likable. I agree. I agree with you that 2020 ke baad se it's as good as Bhuvi is not 100%. And he does well in one match, and after that he lets you down. He does well in another match, 4 matches later, then he lets you down. But somehow this IPL 2020 season, he's always building up his fitness and form. He's always building up his fitness and form, and when the crunch situation comes, he's nowhere to be seen. और यही पिछले 2 वर्ल्ड कप में हुआ है.
you cannot take a risk on Bhuvi in this ODI World Cup. वो आपको वो 10 ओवर वो नहीं देने वाले हैं. I would rather invest in Deepak Chahar. But Deepak Chahar का fitness issues अलग ही level का है. अलग लेवल का फिटनेस इश्यूज है, तो यू हैव टू लुक बियॉन्ड देम. यू हैव शमी, यू हैव मुझे ऐसा लग रहा है, फाइंड अ थर्ड बॉलर एंड डू इट. मुझे ऐसा लग रहा है कि भुवी हैज टेकन अ लिटिल बिट ऑफ एन एक्सटेंसिव ब्रेक टू कम बैक स्ट्रॉन्गर एंड फिटर. नाउ आई वांट टू सी इन दिस आईपीएल इटसेल्फ 4-4 ओवर बॉलिंग डाल के भी वो कितना कंसिस्टेंटली 10-12 मैचेस में कितना करते हैं. I know there's not much of confidence, but I just feel somewhere this guy in his head feels that he can and he has more in the tank. So let's see if he's able to deliver and prove. But quickly on Sunrisers, is Markham reading the team properly? And is Harry Brook actually impressing? Is he actually living up to the kind of talk that was being done around him ahead of the season? Srini. Well, before coming into this series, before coming into the IPL, you saw what this guy has been capable of, right? Although I have, he does, his demeanor never comes across. I'm talking about Markham. His demeanor never comes across as this guy who can set fields on fire. I've always said this. At any given time, he looks to me, he appears like he's just woken up from his sleep. You look at him on the field. I mean, that's how it begins to. But that said, at the start of this conversation, you said something. It's a side that looks good on paper. It's a side that looks really good on paper. Potentially, they belong right up there, except too dependent on, I think, on the batting front. Too dependent. I think, but even there, Harry Brook, has he been really good enough? Yeah. So I'll tell you what's the problem. Well, I'll just come. One point I'll make. Harry Brook. Yeah, agreed. Great talent, and they bought him for a good price. Everything fine. You have to just allow him that breathing space to settle down. When you are getting a guy into the ecosystem, regardless of the talent the guy is coming in with, you got to allow that person some space to settle down, right? You can't start expecting things from day one, is what my feeling is. And I think there is too much pressure out there for these guys to go and... I'll tell you something. Sunrisers Hyderabad, आप देखिए उनके पहले 2 मैच पे देखिए उन्होंने क्या किया. उनका टॉप ऑर्डर क्या था? अभिषेक शर्मा, मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी. पहले 2 मैच में, जिसमें एक में भुवी कैप्टन थे, फिर एक में एडन मार्करम कैप्टन थे. That's not going to work at all. आपके जो भी इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, चाहे वो हैरी ब्रुक हो, एडन मार्करम हो, हेनरिक क्लासन हो, ये सारे के सारे अगर आप इनको मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करा रहे हो, you're not going to generate that impact, you're not going to generate that momentum. That is where Sunrisers failed in the first 2 matches. Today, for the last 2 games, in the last game and today, they have done something different. They have elevated Harry Brook to the opening spot to get that momentum going. Now, you say, has he done enough? No, he's not done enough, but he's not got the opportunity to do enough. पहले he's batting at number 4, 5. That's too low. That's too low. उस टाइम पे अगर आपके 3 विकेट गिर गए, 4 विकेट गिर गए, then you're just in a rebuilding phase. He's a momentum generating guy. I was talking to an English journalist. They see him as the future all format batsman for England. They see him as a future star, somebody like a Kevin Peterson. Obviously, I told him it's too early, and that's just English journalism or English media's hyperbole, which is जो हमेशा वो थोड़ा सा ज़्यादा ही elevate कर देते हैं. But I said कि थोड़ा wait and watch. But I still do believe that he has it in him. I'm not saying कि वो टेस्ट क्रिकेट में इंडिया में आके बड़े-बड़े रन मारेगा. No, that's not going to happen at all. But in Pata wickets पे, given the opportunity, given the time, just like Srini said, give him the time, let him get in, let him get embedded into the system, understand what needs to be done, and I think he will come good in this white ball format or in this white ball tournament. So, and today, Calcutta में match है और अच्छी खासी I'm looking forward to it. Yeah. कैलकाटा में मैच है, पहले बैटिंग सनराइजर्स की है, ओपनिंग हैरी ब्रुक कर रहा है, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है. And Anand, one more thing is, I think he will come good. Yeah. Anand, one more thing is, you're getting a guy, you need the guy, these guys to, spend a month here. You're coming in very different conditions, you're countering dew, you're countering very different conditions, different weather. Of course, then there is competition, then there is added pressure because the team again itself, they're compounded with issues. So I think it takes time, one after the other. I'm not saying every time. There can be instances where a player clicks from day one, but
In general, it happens. देखो भाई, अगर आप And it's the टैलेंट same- हो तो and it's मुझे the same देखना है, with- अगर and it's the अगर same आप में overall, स्पार्क है, ना? मुझे देखना है अगर आपको इतना बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है और आप पे इतना पैसा खर्चा किया है, आपको लोअर मिडिल ऑर्डर से आप ऊपर उठा के ओपनर पे डाल दिया है, आपको कितने और मैच चाहिए? आज के मैच में देखना है, तुम 10 बॉल खेल लो भाई, 10 बॉल खेलो, तुम 20 रन ही बनाओ, लेकिन वो 20 रन में ऐसा तो दिखाओ, एक जादू तो दिखाओ कि भाई इस बंदे में कुछ खास है। सी जो देखने आनंद, वाले KL राहुल लोग जैसे। नंबर ऑफ SRH के रन SRH के साथ हुआ भी तो प्रॉपर वही है ना, because Aiden Markram was not able to come early. उनके साथ they've not been able to get off like Srini said, they've not been able to get off the mark in a proper way. आपका first match में Aiden Markram was not there. That means in the season building up to the season, when you have a new captain in place, और ऐसा नहीं है कि भुवनेश्वर कुमार ने जो स्ट्रैटेजी खिलाया एडन मार्करम ने आते ही वही स्ट्रैटेजी खिलाया, नहीं, द स्ट्रैटेजी वाज कंप्लीटली डिफरेंट। आपने ओवरसीज इंपैक्ट प्लेयर यूज किया, सिर्फ 3 फॉरनर खिलाए और आप पहुंच गए लखनऊ की पिच में जहां पे बॉल नीज के ऊपर से जा नहीं रहा है। सो lot of variables, lot of things just really changed for Sunrisers Hyderabad. I don't think they've had a very smooth run into the tournament. That's why they are taking time getting going, but they just need a चलो spark. भाई, अब तो आज हैरी ब्रूक सनराइजर्स को देते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स फिर ईडन गार्डन में चमकता है, देखते हैं। चलिए, क्रिकेट की बातें हमेशा चलती रहेंगी, मुझे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम लोग बात करते जाएं। देखो 35 मिनट 36 मिनट आज भी हो गए। चलो दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर अभी फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, सेमीकोलन। Have a good festival weekend, guys. अरे टू एवरीवन, चलिए, थैंक यू, नमस्ते।